So next it is about the vertical section of the thallus. तो अगर हम लोग एंथोसेरस का थैलस का लॉन्गिट्यूडिनल और वर्टिकल सेक्शन कर लेते हैं तो क्या क्या पार्ट्स हमें दिखेगा उस तरह से लेट्स सी. तो अगर हमें थोड़ा सा याद रहेगा लाइक द थैलस ऑफ रिक्सिया एंड मार्केंसिया, हियर द थैलस इज मल्टीसेलुलर थिक, इट्स ओके, बट यहाँ पे थैलसेस में फ्रॉम द टॉप टिल द बॉटम हमें टिश्यू डिस्टिंग्विशंस नहीं दिखने वाला है. दैट मीन्स there is no such kind of structures like Rixia and Markensia that upper zone is photosynthetic and lower zone is storage. ऐसा कोई distinctions नहीं है यहाँ पे tissues के बीच. Okay, so that means all these cells here, जितना भी यहाँ पे cells दिख रहा है, सारे के सारे cells एक ही तरह है, सबके सब cells का natures एक ही type का है. Okay, all the cells are actually very much connected and here you can't see any kind of intercellular spaces. Okay, at the very much top layer you can see it is the upper epidermis. Similarly at the very much bottom line it is what made up of the lower epidermis layer. Okay, next from the epidermis top to the epidermis bottom or from the upper epidermis to lower epidermis, whatever participatory cells are there, they all are very much connected, no intercellular spaces are there. और यहाँ पे cells के अंदर एक important character हमें दिख रहा है. These are all green cells. That means they all have the chloroplasts, of course, and inside this chloroplast, interesting structure they have. That is very much unique feature they have. That is pyrenoid. Pyrenoid तो हमें algae जैसे members में दिख रहा था. ब्रायोफाइट्स में ये एक ऐसा मेंबर्स है जहां पे हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाइलिनॉइड मिल रहा है, जो कि थोड़ा बहुत इसका सिमिलरिटीज किसके साथ दिखा रहा है, लाइक द मेंबर्स कोलियोचिट. आई होप याद होगा. देयर आल्सो दिस इज द थैलस. सो समहाउ दिस टाइप ऑफ थैलस आर आल्सो फाउंड इन लोअर मेंबर्स ऑफ प्लांट ग्रुप्स लाइक द एल्गी. नाउ इन दैट केस इफ यू ऑब्जर्व सम अदर स्ट्रक्चर्स आर आल्सो देयर, लाइक at between the thallus or inside the thallus some places are there जहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कुछ cavities मिल रहा है. Actually these are the cavities. Somehow they are developed or they actually being developed by cytogenous activities. That is cells के बीच जो intercellular spaces होता है वो कभी-कभी बढ़ जाता है. उस जगह पे क्या हो जाते हैं, some mucilages are deposited and that type of cavities are known as mucilaginous cavity. And this mucilaginous or mucilage cavities may available in different places of the thallus. Okay, now if you observe carefully, some mucilaginous cavities which are near to the bottom line or near to the lower surface, they are sometimes being connected. यहाँ पे opening हो जाता है और ये mucilage cavities direct environment के साथ कनेक्टेड हो जाता है, बाहरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हो जाता है. दैट इज हाउ दैट टाइप ऑफ ओपनिंग्स और पोर्स आर व्हाट नोन एज स्लाइम पोर्स. सो दैट इज द कैविटी दैट इज नोन एज म्यूसिलेज कैविटी यू कैन से. और इनसाइड म्यूसिलेज कैविटी देयर म्यूसिलेज आर डिपोजिटेड और इट इज आल्सो नोन एज स्लाइम कैविटी. एंड व्हेन दिस कैविटी इज ओपन्ड बाय ए माइन्यूट पोर देन इट इज कॉल्ड स्लाइम पोर. नाउ दिस टाइप ऑफ स्लाइम पोर्स आर एक्चुअली द एंट्री पॉइंट. किनका एंट्री पॉइंट्स है? थ्रू दिस type of pores some cyanobacterial members or cyanophyceal members, blue green algae can enter and they start to colony formation inside the structure. और इस तरह से हमें यहाँ पे कुछ colonies भी दिख सकता है जो कि generally nostoc the cyanophyceal member इनका colonies यहाँ पे होता है and they are actually forming a kind of endophytic growth inside the thallus. Now if you observe the very lower surface of the thallus, some extensions are there and these are what? Rhizoids. We all know यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के rhizoids होते हैं and that is what called smooth walled rhizoids. They don't have kind of tuberculate rhizoid. And in other case you can say they don't have other extensions also, like they don't have scale-like structures जो कि हम लोग को Rixia और Markensia में दिखा था. So these are the few characters about the thallus we can point out here.